Good morning, ninth class student. Once again, in front of you, facing here with a topic lines and angles. Here, student, today I am going to teach you some typical question from lines and angle. So let us see what is the typical question. In the given figure, AB parallel CD, angle APQ equal to P degree, angle QRD equal to R degree, angle PQR equal to Q degree. Okay, then student, you have to show that angle P plus angle Q minus angle R equal to 180 degree. Understood? Here the figure where AB is parallel to CD. Here angle P, this whole angle Q, and this angle is R. Here student, we will draw a simple construction. So let us see here, draw MN parallel CD or AB. Means that MN लाइन्स एक ड्रॉ करेंगे जो AB या CD के पैरेलल होगा. ओके, now let us see how can we prove this problem. Here MN parallel CD and QR is a transversal. Look at here, MN parallel CD and QR is a transversal line. Therefore, angle 1 will be equal to angle R by alternate interior angle. Okay, here I have written angle 1 is equal to angle R for alternate interior angle. Here I have taken angle 1 from here to here and angle 2 from here to here. Okay, now angle 1 plus 2 is equal to Q. Look at here, angle 1 plus angle 2 will be Q. So therefore angle 2 equal to Q minus 1. Let this is the second. Understood? Here Q is equal to Q minus 1, because when we transpose this one this side, then it will be negative sign. So let this is the second. Again AB parallel MN and PQ is a transversal. Once again, look at here in the given figure, AB parallel MN and PQ is a transversal line. Therefore, sum of angle P and angle 2 will be 180 degree by co-interior angle. Understood? Here I have written angle P plus angle 2 is equal to 180 degree by co-interior angle. Understood? Now this imply angle P plus angle Q minus 1 equal to 180 degree using second. In place of angle 2, write down here angle Q minus angle 1 from second. Look at here, second is angle 2 is equal to angle Q minus angle 1. So I am writing here in place of angle 2, angle Q minus angle 1. Okay, in next step, this imply angle P plus angle Q minus R equal to 180 degree. Once again I am using first here
In place of angle 1, I am writing here angle R, because here angle 1 is equal to angle R by alternate interior angle. Okay, so in place of angle 1 we will write here angle R. Okay, using first. Therefore angle P plus angle Q minus angle R equal to 180 degree. Thus the solution is completed. Okay, next question I have taken here. The question in figure, angle 1 equal to 55 degree, angle 2 equal to 20 degree, angle 3 equal to 35 degree, and angle 4 equal to 145 degree. Okay, then you have to prove that AB parallel CD. So let us see how we can prove AB parallel CD. Here the figure is given. This is the figure in Z shape. Okay, here angle 1 is equal to 55 degree already given. 1, 2, 3 and 4. Okay, so angle 1 equal to 55 degree. Therefore angle ABM equal to 55 degree. Understood? So once again, then angle ABM is equal to 55 degree. Let this is the first. Here ABM, because angle 1 is given 55 degree and angle 1 will be ABM. So angle ABM equal to 55 degree. Let this is the first. Here in this figure, angle 2 plus angle 3 is equal to 20 plus 35 degree. Because angle 2 is given 20 degree, angle 3 is equal to given 35 degree. So when we add angle 2 and angle 3, then it will be once again 55 degree. Okay, 20 plus 35, it will be 55 degree. So therefore angle BMN is equal to 55 degree. Let this is the second. Look at here, BMN कितना हो गया? 55 degree. 55 degree, and this also 55 degree. Understood? So from 1 and 2 we get here angle ABM is equal to angle BMN from first and second. Angle ABM equal to angle BMN. Student, these are alternate interior angle with transversal BM. Look at here in the figure. This angle is equal to this angle, each of measure 55 degree, and here BM is a transversal line. Therefore these are alternate interior angle. Okay, therefore we can write here AB parallel MN. अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होगा तो क्या लिख सकते हैं? AB parallel MN. This is the third. Now in next step, angle 3 plus angle 4 is equal to 35 degree plus 145 degree. This angle plus this angle. Look at here in figure. Here the figure. Angle 3 plus angle 4 will be 180 degree. Because here angle 3 is given 35 degree, angle 4 is given 145 degree in your question. ये दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री हो जाएगा. This shows that
sum of co-interior is 180 degree with transversal CM. Look at here in figure, जब एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं विथ ट्रांसवर्सल CM। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइन CD will be parallel to line MN, okay, by co-interior rule. Therefore I have written here, this shows that sum of co-interior angle is 180 degree with transversal CM. So therefore CD parallel MN, let this is the 4. So on comparing third and fourth, we get here AB parallel CD, because here AB parallel MN and CD parallel MN, दोनों तरफ राइट हैंड साइड में MN आ रहा है, therefore AB will be parallel to CD and this question is also proved. Understood? Next question I have taken here in figure, POQ is a straight line, OR perpendicular PQ. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. So let us see how can we prove it. In this figure, here this OR is perpendicular on line PQ. Okay, let us see here proof. OR perpendicular PQ, therefore we can write here angle POR is equal to angle QOR is equal to 90 degree each. OR जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, तो हम लिख सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इच 90 डिग्री। इधर 90 होगा तो इधर भी टोटल 90 ही होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS मैंने लिखा है। लेट दिस इज द फर्स्ट। हाउ, अगर आप एंगल QOS लेते हैं तो ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो एंगल QOS को मैं लिख सकता हूँ एंगल QOR प्लस एंगल ROS। अंडरस्टूड? सो एंगल QOS इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। लेट दिस इज द फर्स्ट। सिमिलरली दिस साइड एंगल POR में भी दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अगेन एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। लेट दिस इज द सेकेंड। वंस अगेन लुक एट हियर इन फिगर, एंगल POR इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल POS प्लस एंगल ROS। अंडरस्टूड? नाउ एडिंग 1 and 2 वी गेट, अब ये दोनों को ऐड कर दूंगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। सो एंगल QOS प्लस एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल 2 ROS, बिकॉज हियर एंगल ROS प्लस एंगल ROS इट विल बी एंगल 2 ROS। नाउ एंगल QOS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री प्लस एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री इन प्लेस ऑफ POR लिखा हूँ एंड इन प्लेस ऑफ QOR अगेन 90 डिग्री, बोथ एंगल इक्वल टू ईच ऑफ 90 डिग्री। लुक एट हियर, POR इक्वल टू QOR 90 डिग्री। सो दैट्स वाई आई हैव रिटेन in place of both 90. Okay, this 90 and 90 will be cancelled, then here angle QOS minus angle POS is equal to 2 angle ROS,
पी ओ एस को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा. In next step, when we find angle ROS, then this side will be divided. So angle ROS equal to 1 by 2 angle QOS minus angle POS. So this question is also proved. You have proved here. You had proved here angle ROS equal to 1 by 2 angle QOS minus POS. Okay. Next question is here. I have taken in the given figure AB parallel CD, find the value of X. Look at here. Here the figure is given where this angle is 120 degree and this angle is 140 degree. एक सिंपल कंस्ट्रक्शन मैंने किया है. ड्रा एम एन पैरेलल ए बी और सी डी. एम एन पैरेलल ए बी और सी डी दोनों में से किसी एक के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी ऑलरेडी गिवन है और जब एम एन पैरेलल ए बी होगा तो ये एम एन इसके भी पैरेलल हो जाएगा. इस तरह से ए बी पैरेलल एम एन पैरेलल सी डी हो जाएगा. ओके. हियर ए बी पैरेलल एम एन पैरेलल सी डी मैंने एक बार फिर से लिख दिया है. नाउ ए बी पैरेलल एम एन, AB parallel MN and BE is a transversal. BE is a transversal. So therefore here angle 1 plus angle 120 degree is equal to 180 degree by co-interior angle. Let this is the first. लिख सकते हैं ना. Again MN parallel CD and DE is a transversal. So therefore angle 2 plus 140 degree will be equal to 180 degree. This also by co-interior angle. Let this is the second. Now adding 1 and 2 we get here. दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ. लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 120 डिग्री प्लस 140 डिग्री और 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. दिस विल बी 360 डिग्री. 1 प्लस 2 विल बी हियर x. ओके. 1 प्लस 2 क्या होगा, x होगा. सो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस 2 मैंने एंगल x लिख दिया प्लस 260 डिग्री. 120 प्लस 140 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री. Angle x is equal to 360 minus 260. It will be 100 degree. Thus the solution is completed of this question. Thank you. Have a nice day.